Good morning, everyone. I, Dixit Chauhan, Assistant Professor in Civil Engineering Department from Bhagwan Mahavir College of Engineering and Technology. Today, I am going to take a lecture on harbor engineering. This is the content of today's lecture. Now, first is introduction, and in this, water transportation. So, what is water transportation? Water transportation is the transportation which is done by the water or which is done in the water. And water transportation is divided into two subcategories. First, inland water transportation. Second, ocean water transportation. What is inland water transportation? Inland water transportation is either in the form of river or in the form of canal. या तो वो रिवर में होगा या तो वो कैनल में होगा. सेकंड, ओशन वाटर ट्रांसपोर्टेशन. ओशन वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज adopted for trade and commerce. It is estimated that 75% of international trade is carried out by shipping. 100 में से 75% international trade carried out by only shipping. The development of Navy force is intended for national defense. जो नेवी फोर्स का डेवलपमेंट होता है वो ओनली एंड ओनली फॉर द नेशनल डिफेंस. दूसरी कंट्री से जो अटैक होता है उसको डिफेंस करने के लिए नेवी फोर्स होता है. देन ओशन वाटर ट्रांसपोर्टेशन हैज़ एन लिमिटेशन एंड इट पोसेस हाई फ्लेक्सिबिलिटी. लिमिटेशन भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी. देन एडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन. सो फर्स्ट एडवांटेज इज इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ डिफेंस कर सकते हैं. सेकंड, चीपेस्ट मोड. सबसे ज़्यादा चीप है ट्रांसपोर्टेशन में तो वो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन. थर्ड, leads to overall development of commerce, industry and international trade. Fourth, high load carrying capacity. Fifth, encourage consumption of foreign goods. Sixth, requirement of cheap motive power for its working. उसको काम करने के लिए ज़्यादा मोटिव पावर नहीं चाहिए, चीप ही चलेगा. Then disadvantage of water transportation. So that is the disadvantage are slow in operation, consumes more time. ऑपरेशन भी स्लो होगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा. यूज़फुल ओनली व्हेन वाटर इज़ अवेलेबल एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. जब भी वाटर एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा तभी वी कैन यूज़. may lead to accident in case of frequent ocean storms. अगर ओशन में ज़्यादा स्ट्रॉम आएंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है. मोर चांसेस ऑफ अटैक बाय अदर कंट्रीज़. ज़्यादातर जो अटैक होता है दूसरी कंट्रियों से वो बाय वाटर होता है. आप सबको तो पता ही होगा पाकिस्तान से जितने भी होते हैं वो बाय वाटर ही आते हैं गुजरात महाराष्ट्र में. Then the fluctuation in water level cause rubbing of ship against the berth. मतलब जो वाटर लेवल में फ्लक्चुएशन होता है वो शिप की बर्थिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. बर्थिंग मतलब पार्किंग. Then harbor and port. A harbor can be divided as a sheltered area of the sea in which vessel could be launched, built or taken for repair or could seek refuge in time of storm or provide for loading and unloading of cargo and boarding and unboarding of passengers. मीन्स हार्बर ऐसी जगह है जहाँ पे वो सेफ़ एंड सूटेबल अकोमोडेशन फॉर वेसल को प्रोवाइड करते हैं और रिफ्यूलिंग, रिपेयर, लोडिंग, अनलोडिंग, सप्लाइज़ वो सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती है. देन पोर्ट. पोर्ट इज़ अ हार्बर वेयर मरीन टर्मिनल फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड.
It means port is equal to harbor plus storage facilities plus communication facilities plus other terminal facilities. A port is a place which regularly provides accommodation for the transfer of cargo and passengers. Then harbor layout. This is the layout of harbor. You can see the different component of harbor like jetty, pier head, entrance channel, turning basin, breakwater, salad basin, dry dock, wait dock, workshop, terminal building, quay, raft, shed, piers, like this. We will discuss each component one by one. So now first is entrance channel. You can see this is the entrance channel. Now entrance channel, water area from which ship enters in the harbor, and it could be have sufficient width, which is 100 meter for small harbor, 100 to 160 meter for medium harbor, and 160 meter to 260 meter for large harbor. Second, breakwater. Breakwater is a protective barrier made up of concrete or coarse rubble masonry constructed from shore towards the sea to enclose harbor. In figure, see, this is breakwater. ये पूरा then turning basin. It is a water area which is required for maneuvering the ship after entering to the harbor, and it is large enough to permit free turning. And shelter basin, it is the area protected by shore and breakwater. We can see in figure, see, this is turning basin. The ship, the vessel come from here and take a turn, then here berthing, and this whole area is sheltered basin. Okay, next, pier. It is a solid platform at which berthing of ship on both the side are possible. पियर के बोथ साइड पे बर्थिंग ऑफ शिप्स वेसल्स पॉसिबल है. देन राफ्ट. इट इज़ अ डॉकिंग प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द शोर लाइन, प्रोवाइडेड बर्थिंग फैसिलिटी ऑन वन साइड ओनली. इट मीन्स डॉकिंग प्लेटफॉर्म है जो कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द शोर लाइन, शोर लाइन के पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया जाता है और बर्थिंग फैसिलिटी ओनली वन साइड अवेलेबल रहती है. Then quay. It is also dock parallel to the shoreline. It is a solid structure providing berthing facility on one side and remaining the earth on the other side. In raft, berthing facility is on one side and second side is open. In quay, berthing facility on one side and second side the earth filling. Then dry dock. Dry dock. It is a chamber provided for maintenance, repair and construction of ships. It includes walls, floor and gate. Then wet dock. Due to variation in tidal level, an enclosed basin is provided where in number of ships can be berthed. It has an entrance which is controlled by a lock gate. Then jetty. It is a solid platform constructed perpendicular to the shoreline for berthing of ship. See in figure. See, jetty on entrance channel. Wait. Then this is the quay. This is the raft. See, this area is open and this area is earth filling. This is dry dock
This is wait dock. Okay, then next, requirement of good harbor. If we have to construct a very good harbor, then what are the requirements? So first is it should be connected with roadways and railway. रोड के साथ भी और रेल के साथ भी कनेक्टेड होना चाहिए. सेकंड, सराउंडिंग लैंड शुड बी फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड. हम बोलते हैं ना आसपास की ज़मीन, मीन्स सराउंडिंग लैंड वो फर्टाइल होनी चाहिए और डेंसली पॉपुलेटेड मतलब पॉपुलेशन भी होनी चाहिए. थर्ड, शिप चैनल्स मस्ट हैव सफिशिएंट डेप्थ फॉर ड्राफ्ट और वेसल. मतलब जहाँ पे भी हम हार्बर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे वाटर की इतनी डेप्थ होनी चाहिए कि वेसल कैन फ्लोट एंड कम इन अ हार्बर थ्रू एंट्रेंस चैनल. ओके. फोर्थ, ब्रेक वाटर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव एक्शन. मतलब ब्रेक वाटर हमको कंस्ट्रक्ट करना ही है. वाटर लेवल में जो फ्लक्चुएशन होता है उसके लिए. देन द बॉटम शुड फर्निश्ड सिक्योर एंचोरेज टू होल्ड शिप अगेंस्ट द विंड फोर्स. देन नंबर ऑफ quay, piers and raft should be sufficient for loading and unloading of cargo. Then it should have facilities like fuel, repair and etc. for ships. Harbor area should be sufficiently large. It should have enough cold storage. Got it? Then classification of harbor. Now classification is based on protection needed. First, उसमें क्या क्या आएगा? तो उसमें आएगा फर्स्ट नेचुरल हार्बर. नेचुरल हार्बर मीन्स इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्ट्रॉम एंड वेव्स बाय नेचुरल लैंड कंटूर्स, रॉकी आउटपुट क्रॉप्स और आइलैंड that is called as natural contour or natural harbor. Like there is an example Kandla Port, Cochin Port and Mumbai Harbour. See in figure. This is entrance channel. This is natural land. So this is called natural harbor. Then semi-natural harbor. A semi-natural harbor is protected on the side by the contours of land and require man-made protection only to the entrance. There is an example of Visakhapatnam Port. See. Semi-natural harbor. This is natural and entrance channel is man-made. See, semi-natural harbor. Then classification of harbor में third, classification based on protection needed में third one is artificial harbor. An artificial harbor is one which is man-made and protected from storm and wave by engineering works. The example is Chennai Harbour. सी आर्टिफिशियल हार्बर पूरा का पूरा मैन मेड होता है. एंट्रेंस चैनल, फिर यहाँ पे सब आ जाएंगे, ब्रेक वाटर, सेक्टर बेसिन, टर्निंग बेसिन, ड्राई डॉक, वेट डॉक, सब कुछ इसमें आर्टिफिशियल में मैन मेड ही होगा. देन क्लासिफिकेशन ऑफ हार्बर. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी. उसमें फर्स्ट क्या आएगा? Commercial harbor. It is a harbor in which docks are provided with necessary facilities for loading and unloading of cargo. Example, Chennai Harbour. Second, refugee harbor. Refugee harbor, these are used as a haven for ship in a storm, or it may be a part of commercial harbor. मतलब storm के दौरान हेवन का काम करेगी रेफ्यूजी हार्बर. उसका एग्जाम्पल है चेन्नई हार्बर, विशाखापट्टनम हार्बर. सी इन फिगर.
This is refugee harbor पूरा. Then commercial harbor. ये सब कंटेनर है. These all are the containers which are used for the commercial purpose from one country to another country. Then military harbor and fishing harbor. In military harbor, it is a naval base for the purpose of accommodating naval ships or vessel, and it serves as a supply depot. Example: Mumbai Airport, Cochin Harbor. Sorry. Then fishing harbor. These harbor have facilities for departure and arrival of fishing ships. These have also necessary arrangement of catch fish. See in figure. This is military harbor. All are ready. Okay, for the purpose like defense. Then fishing harbor. See, this is the fish. This harbor is for fishing purpose. Then classification based on utility. Marina harbor. These are the harbor providing facilities of fuel, food, shower, telephone, etc. for small boat owners having temporary and permanent berth. And this is the classification: large marinas and small marinas. In large marinas have 200 or more berthing facilities, and in small 100 berthing facilities. मतलब 100 से कम वेसल बर्थ कर सकते हैं स्मॉल में, और लार्ज में 200 और 200 से ज़्यादा. सी बर्थिंग मीन्स पार्किंग. ये पूरा बर्थिंग अवेलेबल है. Okay. Then next, classification of harbor based on location. In location: ocean, river, canal and lake. First, ocean. Harbor located on the coast of sea or ocean, it is called as ocean harbor. Harbor constructed along the bank of river, it is called as river harbor. Harbor located along the canal of sea navigation, it is called as canal harbor. And harbor constructed along the shore of lake, it is called as lake harbor. Very simple. These are the pick: ocean harbor, ocean bay; river harbor, on the bank of river; canal harbor with canal line; and lake harbor on the shore of lake. Then last topic, site selection for harbor. If we want to construct a harbor, then how can we select a site? These are some criteria. The guideline factor which play a great role in the choice of site for a harbor. First, availability of cheap land and construction material. सस्ती लैंड और कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए फर्स्ट. सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़. थर्ड, नेचुरल प्रोटेक्शन फ्रॉम विंड एंड वेव, नेचुरल प्रोटेक्शन भी चाहिए. फोर्थ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द लोकेलिटी. देन सी बेड, सबसॉइल एंड फाउंडेशन कंडीशन, मतलब सी बेड में सबसॉइल की कंडीशन कैसी है, वो जो फाउंडेशन पूरा रहता है उसकी कंडीशन. देन ट्रैफिक पोटेंशियलिटी ऑफ हार्बर, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड फ्रेश वाटर. देन फेवरेबल मरीन कंडीशन. एंड लास्ट वन इज डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट, कौन सा रहेगा. बाय दिस आई एम डूइंग ओवर my lecture. Thank you.